Hello बच्चों, let's read this question. For a particular reaction, delta H naught is equals to minus 76.6 kilojoule and delta S naught is equals to 226 joule per Kelvin. This reaction is, and the given options are these, and according to the given option we can see हमसे पूछा गया है कि reaction spontaneous होगी या नहीं, and about the temperature is also said that option A is spontaneous at all temperature, B says non-spontaneous at all temperature, option C says spontaneous at temperature below 66 degrees Celsius, and option D says spontaneous at temperature above 66 degrees Celsius. For this we will see first key concept of this question, and the given question जो है that is related to the spontaneity of the chemical reaction. Spontaneity of chemical reaction. Now let us discuss about this. जब भी हमें thermodynamics में we have to check the spontaneity of the chemical reaction, then we see the delta G. And delta G क्या है? It represents the change in Gibbs free energy. Change in Gibbs free energy. For this we should know Gibbs free energy क्या होता है? Gibbs free energy is that maximum energy जो कि हम convert कर सकते हैं into the useful work. And delta G is the change in Gibbs free energy. एंड स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी का वैल्यू शुड बी ऑलवेज लेस देन ज़ीरो, और वी कैन से हमेशा नेगेटिव होना चाहिए. इट शुड बी नेगेटिव टू द spontaneity of the chemical reaction. Now according to the given question we can see हमें डेल्टा H नॉट और डेल्टा S नॉट गिवन है, which means स्टैंडर्ड एंड change in enthalpy and standard change in entropy given है. So we can write the formula for the change. जो हमारे पास डेल्टा G नॉट होगा, which means standard change in the Gibbs free energy, that is equals to the delta H naught minus T delta S naught. So हमारे पास जो T है that is the temperature, and यहाँ पे जो H और S है that are representing the enthalpy and the S is the entropy, और delta sign represent कर रहा है change का, and this not represents the standard. and the basically जो हमारे पास standard conditions होती हैं that are the रूम टेम्परेचर पर हमारे पास रिएक्शन होगा, और वी कैन से 25 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होगा, एंड द प्रेशर इज आल्सो फिक्स्ड. फॉर दिस वी कैन सी जो हमारे पास डेल्टा एच नोट का वैल्यू गिवन है डेट इज माइनस 76.6 किलो जूल माइनस टेम्परेचर एंड 226 जूल पर केल्विन, 226 जूल पर केल्विन, एंड हमारे पास यहाँ पे टी है टेम्परेचर. नाउ वी शुड have the value of delta G naught नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए. सो सबसे पहले हम किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे. 1 किलो जूल में वी हैव 10 raised to power minus 3 जूल, it is 10 raised to power 3 joules. So here we can write minus 76.6 into 10 raised to power 3 joules, ये 3 आएगा यहाँ पे 3 joules minus 226 जूल पर केल्विन है, और जो हमारे पास ये टेम्परेचर है इसके लिए जो यूनिट रहेगा दैट शुड बी इन द केल्विन. सो हियर वी कैन राइट एज पी केल्विन. सो केल्विन और पर केल्विन कैंसिल हो जाएगा. सो हियर वी कैन सी ये जूल है एंड जूल में से माइनस हो सकता है. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी हमारे पास ये वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. बट द रिएक्शन इफ वी वांट टू बी स्पॉन्टेनियस तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या रहना चाहिए, that should be negative, and this is possible at all the temperatures because हमारे पास जो delta H का value है that is the negative and delta S का value is positive. So by this we can say जो हमारा final answer होगा that will be option A, कि जो ये हमारे पास particular reaction होगा that will be spontaneous at all temperature, at all temperature. So let us mark the option A as the final answer of this question. B, C and D are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.